Hello, welcome students. Today we are starting. We are going to see lesson number 4. The name of the lesson is Nutrition in Living Organisms. Okay. What type of nutrition is seen in the living organisms? In the beginning only, two questions are there. What is malnutrition? In 6th standard we have learned the meaning of malnutrition. What is it? It is nothing but the bad health due to insufficient right kind of food. अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को सही तरह से सही तरीके से सफिशिएंट फूड नहीं मिलता है तो उसकी हेल्थ बिगड़ जाती है. देन सच केस इज कॉल्ड एज malnutrition case. Second question is there, which are the ways to prevent malnutrition? अगर किसी को हमें अगर ऐसा लगता है कि दैट नो वन शुड सफर फ्रॉम malnutrition, किसी को malnutrition की कंडीशन नहीं होनी चाहिए, देन फॉर दैट पर्पस व्हाट शुड वी डू? देन वी शुड सप्लाई और वी शुड प्रोवाइड plenty of fruits, vegetables, then milk, then dairy foods, we say dairy products, then we can say proteins, meat, fish, eggs. All such type of food should be provided to that living organism in a sufficient and right manner. Then only that living organism will come out of the case of malnutrition. Okay. Now we will see the meaning of nutrition, because our name of our lesson is only nutrition in living organisms. So because of that we should know the meaning of nutrition. Here it is given. What is it? Some life processes go on continuously in living organisms. Substances which are digested and assimilated for obtaining energy and for the growth and health of our body are called foodstuffs. Okay. So first we will see the meaning of foodstuffs. What are foodstuffs? Okay. Now we know that every day we need some food. Okay. And because of that food only our body gets energy. Means it is there, it is very true in case of all the living organisms, that all the living organisms, there is a continuous life process going on in every living organism, in which substances are digested and assimilated. Assimilated means they are absorbed. In 6th standard you learn about the digestive system. The substances, whatever food we eat, it gets digested in the mouth, in the stomach, in the small intestine, and then later on it is absorbed by the small intestine. Means it is assimilated by the small intestine. Okay, for what purpose all this thing is done? It is only done for the purpose of obtaining energy. Our body obtains energy. Okay, then it is for the growth and for the health of our body. Okay, three things are there: obtaining energy, and for what? To obtain that energy for the growth and health of our body. All these are called as foodstuffs. Okay, we get several types of nutrients from foodstuffs. Nutrients can be classified into two types, namely macronutrients and micronutrients. Now in 6th standard you will learn about the some of the nutrients which our body needs, like suppose carbohydrates, proteins, fats, minerals, vitamins. Okay, all these things we have learned in 6th standard. Okay, the same thing we are going to see now. All these nutrients, they are divided into two groups, two types. Which are those two types? The first one is macronutrients. Macro means mote. Okay, mote means jada pramana. The nutrients which are required in more amount, they are called as macronutrients. And second one is micronutrients. The meaning is the nutrients which are required in micro form, यानी थोड़े से, ज़्यादा नहीं, थोड़े से. Okay, such two categories we can say, or such two types are made of the nutrients. What are these nutrients? Like carbohydrates, proteins, and fats are required in large quantity. These are called macronutrients.
ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं कौन से कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से एंड फैट से, ये हमें ज्यादा प्रोपोर्शन में जरूरत पड़ती है हमारे बॉडी को, इसलिए उनको क्या बोलते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स. रिमेंबर द नेम्स अगेन, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स. द सेकंड वन इज मिनरल्स एंड विटामिन्स आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी, सो दे आर कॉल्ड एज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. तो उनको क्या बोलते हैं, micronutrients. Okay, to the right side we will see here what is given in the yellow colored box, very important information, and there is the meaning of nutrition. The process of taking in and using food which takes place in living organisms is called nutrition. उसको बोलते हैं nutrition. किस लिए, कौन सी प्रोसेस, खाना जो होता है, whatever the food we eat, okay, वो खाना अंदर लेना और वो यूज करना. ओके, मीन्स वॉट एवर फूड वी ईट एंड उसका जो यूज होता है अपने बॉडी के अंदर, दैट इज कॉल्ड एज न्यूट्रिशन. ओके, अब इसकी जरूरत क्या है, व्हाट इज द नीड फॉर न्यूट्रिशन, ये क्यों करना चाहिए. नंबर वन, टू सप्लाई एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर डूइंग वर्क, वट एवर वर्क वी डू एवरी डे सिंस मॉर्निंग टिल लेट नाइट, ओके, इवन थ्रू आउट द नाइट ऑल्सो, ओके, throughout the night also, even for respiration and all these things, our body requires energy. Okay, दूसरे दिन सुबह भी उठना है, उसके लिए भी एनर्जी चाहिए. Okay, so 24 hours our body requires energy, and then to supply this energy required for doing work. Okay, इसलिए हमें किसकी जरूरत है, न्यूट्रिशन, यानी खाना खाना चाहिए, उसका डाइजेशन होना चाहिए, that is nutrition. नंबर टू, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, अपने बॉडी की ग्रोथ होनी चाहिए, उसकी डेवलपमेंट होनी चाहिए. ओके, नंबर थ्री, टू रिप्लेस द डैमेज सेल्स एंड रिपेयर टिश्यूज, अगर हमारे बॉडी को कहीं जख्म होता है, कुछ होता है, ओके, सो टू क्लियर द वेयर एंड टेयर ऑफ टिश्यूज, दैट इज कॉल्ड वेयर एंड टेयर. अगर टिश्यूज फटते हैं, टूटते हैं, ओके, तो उसका रिपेयर करने के लिए, ओके, फॉर दैट पर्पस न्यूट्रिशन इज रिक्वायर्ड. Number four, to fight diseases. Suppose in case if we get infection something, then to fight against the infection our body needs nutrition. Then next point is autotrophic nutrition. What is the meaning of autotrophic nutrition? Some organisms can produce their own food and thus nourish themselves. This is called autotrophic nutrition. उसको बोलते हैं autotrophic nutrition. कुछ organisms, ओके, कुछ लिविंग थिंग्स, दे कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड, वो उनका खुद का खाना खुद बनाते हैं, एंड दे नरिश देमसेल्व्स. नरिश यानी दे प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू देमसेल्व्स. ओके, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफिक. ऐसे न्यूट्रिशन को बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ओके, देन हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ओके, ये दो प्रकार का न्यूट्रिशन है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर दिस. Okay, what we have to remember, these two. Okay, these 2 points we have to remember. These 2 points, these are the 2 types of nutrition, autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition. autotrophic में क्या है, जो organisms अपना खुद का खाना खुद बनाते हैं और खुद को नरिश करते हैं, they are called as autotrophic. That type of nutrition is called as autotrophic nutrition. And heterotrophic यानी some organisms depend on other organisms, plants or animals, for their food. This is called as heterotrophic nutrition. यानी कुछ organisms ऐसे हैं, बहुत सारे, okay, which are dependent on other organisms. They are dependent on other organisms. So other organism यानी कौन सा भी हो सकता है, plants हो सकते हैं, animals हो सकते हैं. Okay, तो वो खुद के न्यूट्रिशन के लिए किस पर डिपेंडेंट है, ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स. देन जो ऐसे टाइप का जो न्यूट्रिशन होता है उसको दैट इज कॉल्ड एज हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ओके, टिल ये पॉइंट इज क्लियर. नेक्स्ट पॉइंट, ऑटोट्रॉफिक. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वी विल सी ड्यूरिंग द नेक्स्ट वीडियो. ओके.